हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ व्यू टू मार्केट्स। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं वीडियोस बना नहीं पाया, आई वाज ट्रैवलिंग। बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे ऑन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, राइट? एंड आई एम श्योर दीज वीडियोस आर हेल्पिंग यू। प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, राइट? सो अगर हम इसको देखते हैं कि हमारी अभी मंथली कैंडल किस तरीके से बन रही है, अगर आपको याद होगा कि ये जो हमारी मंथली कैंडल थी यहाँ पर, राइट, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल विच वाज ऑल ग्रीन, राइट? नाउ वी हैव ऑलमोस्ट रिट्रेस्ड। अगर आप देखेंगे, हम ऑलमोस्ट यहाँ से रिट्रेस करके एक हमने वो गिव अप कर दिया है। दिस वीकली कैंडल, इफ यू सी, हैज ऑलरेडी गिवन दैट confirmation. If you move to daily candle, here we have almost like given a gap down here and stayed in that strict, in the price action, and before we actually made a continuation pattern from here. Now there is an expectation यहाँ पर कि मार्केट थोड़ा नीचे आके एक हमें एक ग्रीन बुलिश मूव दे सकती है बिफोर इट कंटिन्यूज टू गो डाउन द मोमेंटम अगेन। तो वो मोमेंटम हमारा कंटिन्यू हो सकता है, बट अभी हमारा जो मोमेंटम है, हम इस लाइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे, राइट? अगर हम इसको देखें, हम यहाँ पर अभी इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे, बट हम यहाँ पर देखेंगे कि ये अभी और नीचे हमारी मार्केट कितना आ सकती है, राइट? So if I just quickly go and move to a price which is a 1 hour time frame, right? हमने यहाँ पर कुछ लेवल्स बनाए थे, अगर आपको याद होगा, राइट? हमने यहाँ पर जो लेवल्स बनाए थे वो बनाए थे ये 61.8 के, जो हमने एकदम टॉप से लिया था, जहाँ से हमारी ये फॉल शुरू हुई थी, राइट? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट लाइक, अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा अभी लेवल आया नहीं है एंड वी आर ऑलमोस्ट लाइक कम अ लॉन्ग वे डाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस लेवल्स को अभी हटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर, और हम जो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मार्केट को एटलीस्ट, अगर एक यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं हम, राइट, यहाँ पर, बिफोर वी एक्चुअली गेट मोर clarity on how the market is going to behave, there is one area that we should look for, which is this area, right, from the retracement standpoint. So this is one area. There's another area which is coming here, right? If you see, there is one area which, if I just take it here till here, right, there is one strong support that might also be considered in the days to come, right? कि एक यहाँ पर हमारा एक ले सकता है before we go and breach these lower levels and almost completely fill this gap, right? तो देखिए, देर आर टू व्यूज टू इट, एंड वन इज बेरिश एंड वन इज बुलिश, राइट? सो if I just talk about one thing, right, if I'm just going to move to a lower time frame right now, let's suppose I go to 15-minute time frame, right? Now in the 15-minute time frame, right, what we see here is that there is an expectation, right, or there is an opportunity area. If we are going to break, let's suppose, this 200 800 level, 23 800 levels, right? So I would just quickly write it down. One is the bearish view, right? That is this. The bearish view is that if the market is going to break 23 800, right, 23 800 levels, so I see an opportunity area which is, the market can go to 23 580 or 560 levels, right, in that downside, right? That's one area. Now what we need to consider is that from the option, there is a very strong option that has been done on the call side. तो वो आपको जो एक बार, अगर मैं कॉल ऑप्शन का डेटा भी दिखाएंगे, तो ये देखिए, ये जो कॉल ऑप्शन के जो हमारा डेटा है, ये ऑलमोस्ट 23, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी एट स्टेक है, राइट? वी टॉक अबाउट मनी एट स्टेक लेवल, राइट? मनी एट स्टेक, राइट, जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑन द कॉल साइड राइट नाउ, right? So that money at stake, if we talk, at 24 200, 24 300, 24 400, and 24 500 have the majority of the money at stake. So there is a very strong chance that we are not going to break these levels on the upside, right? And that's one for sure, that I'm not going to see the market down unless there is a very strong short covering that you see during the market hours, because of some news related event that might happen from Trump, or any news related event related to the Iran and the US-Israel war. तो वो हम इसको देखेंगे. Unless that happens, we may not expect that these levels to break that easily, right? So that is one, right? And there are another 2 3 different areas for the put writers which are at these levels, right? तो ये जो लेवल्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं.
राइट। अगर हम यहाँ पर इसको ऑप्शन चेन में देखें, राइट, अगर हम इसको ऑप्शन चेन पे देखें तो जो अभी की ऑप्शन चेन है वो उसमें अगर आप देखेंगे द कॉल साइड इज डेटा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। अगर आप देखें 23, अगर हम 400 का देखें यहाँ पे 23, ये 500 है, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई है यहाँ पर, ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ का ओआई है यहाँ पर। अगर आप देखें 24,400 वी हैव 53 lakhs और विच वाज इंक्रीज बाय 18 टू 71.8 lakhs, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे 1.16 करोड़, यहाँ पे इतना, यहाँ पे 88 lakhs का, एंड देन सब्सिक्वेंटली वी हैव नाउ इफ़ यू सी द स्ट्रॉन्ग कॉल लेवल्स आर एट 24,200। अगर यहाँ पे आप देखेंगे पुट साइड में, यहाँ पुट साइड में ये जो है यहाँ पर, ये इवन दो दीज पुट राइटर्स हैव रन फॉर देयर कवर, दे हैव कवर्ड देयर पोजीशंस, दिस वाइट गैप डिफाइंस दैट, बट उन्होंने अभी भी यहाँ पे जो मनी एट स्टेक है उनका बहुत अभी भी है यहाँ पर, राइट। सो वील हैव टू सी दीज लेवल्स। Then you have 24,000 and this 23,900 are another level, and 23,800. So these are the strong levels as well where the put writing has been done very effectively. Now the thing is that if we move and see what if the market is going to break on the upside, let's suppose, राइट। अगर हम देखें यहाँ पर 23, अगर हम लेट्स सपोज 23,580 पे ही खलते हैं कहीं गैप डाउन कल, राइट, अराउंड 23,580, अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ 1 आवर के चार्ट में, सो एट दीज लेवल्स, समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, राइट, अगर मैं इसको यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर मार्क करूँ, around this area, right, around this area, so around 23,580, right, I'll just quickly write it down, 23, the levels that we spoke about, 23,580 levels, right. So this is one area where if the market is coming at these levels, right, I will see for an opportunity, and the first target, the first opportunity is going to be sitting for at least these levels, right, around this much. If I see how many points are these, अगर आप इसको देखें कितने पॉइंट्स ये आते हैं, सो we might get to see these points instantly within the trading hours itself. So maybe around 400 points at one go, right, around हम इस एरिया में ही आके दोबारा क्लोज कर सकते हैं बिफोर वी थिंक अबाउट इट। और हम इसका भी अगर हम 250 पॉइंट्स भी हम कैप्चर करें, so which is what is we are expecting, then if I just tell you that if we are expecting अराउंड दिस एरिया, राइट, और हम इसको देखें, अगर हम यहीं पे कहीं पे मूव होते हैं, अगर हम यहीं पे किसी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं तो हम अराउंड 61, 24,200 या 24,300 तक भी जाने की एक क्षमता रखते हैं, राइट। सो वो प्राइस एक्शन विल टेल अस दैट व्हाट इज़ द मार्केट लो दैट इज़ बीइंग फॉर्म फॉर टुमारो। अगर हम यहाँ पे कहीं पे आते हैं 24 इस लेवल पर, तब हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 24,300 तक जाने की एक क्षमता रख सकते हैं। सो दैट इज़ अ व्यू फॉर द मार्केट, राइट। वेल, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ subscribe and share it with your friends and family. Thank you so much for watching. Have a great trading day. Take care. Bye bye.